Hello everyone, I Anna Khan once again proudly welcomes you back to our Balajee online classes. Today I'm here to teach you your 5th chapter of English 2 of class 6th, that is numbers. I'm sure this must have sounded strange to you all, that how come we are going to learn numbers in English? But there is a difference between the mathematical numbers and the numbers which we are going to learn today. When I said numbers, it does not mean that we are going to talk about anything related to arithmetic or algebra, but where and when to use the singulars and plural forms of English. Today we are going to be discussing about that. I'm 100% sure that you all must be knowing by now that what are singular and plurals. So yes, this is the only chapter based on that, and we will be learning about that itself. So, what are singulars? Singulars are those where we are considering any one single thing. For example, I have this pen here. This is one pen. This is singular. But suppose if I am gathering 2 or more pens, like see, now I have 3 pens with me, and it is like what I have said, 3 pens with me. Automatically I have used the plural form of it. So when it was a single pen, it is considered to be as pen, but when I have added the quantity, it has pluralized, means इसकी जो यूनिट थी वो चेंज हो गई. एंड क्या होता है जब हम लोग किसी भी चीज को, जब वो सिंगुलर होती है या एक होती है, उसे सिंगुलर कहते हैं. बट जैसे ही उसकी क्वांटिटी 1 से ज्यादा हो जाए या 1 से बहुत ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें कि जस्ट बिकॉज ये 2 है इट वुड बी प्लूरल, नो, इट कुड बी 2, इट कुड बी 20, इट कुड बी 200, इट कुड बी 2000 एंड सो ऑन. सो एक नंबर अगर 2 में मल्टीप्लाई हो गया है तो भी प्लूरल हो जाएगा, और अगर वो उससे बहुत ज्यादा भी आगे बढ़ गया है, बल्क में आ चुका है, तो भी वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा. As given in your textbook, I am going to be telling you your 10 rules out of which you are supposed and you should keep in mind when you are making plurals of it. So, the very first rule is with most nouns we simply add s to the singular. So, क्या होता है जहां पर भी एक simple nouns है, हम लोग को उसके आगे simply s लगा लेना होता है. हमें पास एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए I said a pen. Pen is a noun. It is a common noun and प्लूरल फॉर्म हो जाएगा पेन्स. सिंपल एस ऐड हो जाता है जब भी एक सिंपल नाउन होता है. दिस इज द फर्स्ट रूल. द सेकेंड रूल इज व्हेन अ सिंगुलर एंड्स विद द साउंड्स मेड बाय द लेटर एस, जेड, एस एच, जी ई और सी एच. क्या हो जाता है इसमें? वी विल ओनली एड एस इफ द सिंगुलर एंड्स विद ई. तो और जब ऐसा नहीं हो रहा होता है, तो जब भी इन साउंड्स के लेटर्स होते हैं, वी विल बी एडिंग ई एस इन दैट. सो फॉर एग्जाम्पल पास, पास का प्लूरल हो जाएगा पासेस. ठीक है. देन फॉर एग्जाम्पल बस, बस वुड बी बसेस. देन रूल नंबर 3 सेज दैट इफ द लेटर एंड्स विद पी, टी, के और टी एच, अगेन एस विल बी एडेड इन इट. फॉर एग्जाम्पल कैप, इट विल बिकम कैप्स. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, उनमें हम लोगों ने सिंपली उन अल्फाबेट्स पे पर्टिकुलरली एस ऐड हो जाता है. जैसे मैंने फर्स्ट रूल में बताया कि जहां पर भी सिंपल नाउन है वहां पर हम लोग एस ऐड करते हैं. नेक्स्ट केस में क्या हुआ? नेक्स्ट केस में जहां पर डिफरेंट लेटर्स आए, वी वर एडिंग ई एस और एस. अब इस केस में क्या हो रहा है, जहां पर भी ये अल्फाबेट से एंड होगा, फॉर एग्जाम्पल पी, टी, के और टी एच, अगेन वी विल बी एडिंग एस इन द लास्ट, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए. जब भी कोई अल्फाबेट हमारा या कोई वर्ड y से एंड होता है, then we are supposed to add y की जगह पर we replace the y with I and then we add es. This is the fourth rule. क्या हुआ? जहां पर भी wherever it is like the word or the noun is anything is ending by y. For example, baby. Baby ends with y. तो y फौरन रिप्लेस कर देना है आपको I से. y की प्लेस पे तुरंत आप जब प्लूरल फॉर्म लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग I and then you will be writing es. So baby will become babies, monkey will become monkeys. This will go on. The fifth rule is singulars ending
in O usually form plurals by adding S. क्या हुआ इस केस में भी जहां पर सिंगुलर हमारा O पे एंड हो रहा है कोई भी वर्ड वहां पर हम लोग सिंपली S एड ऑन करेंगे. देन फॉर एग्जाम्पल हमारा 6th रूल है कि जहां पर भी कोई भी लेटर F से एंड हो रहा है like F or FE, then what we will be adding? We will be adding VES in that place. जैसे हमने आपको रूल बताया Y से एंड हो रहा था जहां पर भी लेटर हम लोग वहां पे उसकी जगह पर क्विकली I कर दे रहे थे. तो सिंपली जहां पर अब F से एंड हो रहा है वहां पर VES हो जाएगा. So for example half will become halves, knife will become knives. So this is the rule. This is the 6th rule which will be applied here. Then when I say rule number 7, it is like the plurals of small number of nouns are formed by a change in the vowel sound. बहुत से अल्फाबेट्स ऐसे हैं या बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनका प्लूरल जो है उनके वावल से चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल फुट, फुट का प्लूरल हो जाता है फीट. तो क्या हुआ जो वाल उसमें लगा हुआ था दैट वाज डबल ओ वो चेंज हो गया डबल ई से. These are some special cases. Then rule number 8 is some nouns do not change. For example, deer. Deer मतलब बहुत से ऐसे words हैं बच्चों जो उनके plural forms नहीं होते. For example, deer, sheep, fish. These are all the words जिनके हमारे पास plurals नहीं होते या इन पे कोई भी rule apply नहीं होता, कोई भी criteria नहीं लगता. So then we will say rule number 7. Some nouns are always used as singular though they sound like plurals. Like news, politics, billiards. इसमें क्या हो रहा है ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें S तो लगा हुआ है but these are all singulars. इनके कोई plurals नहीं है but since they have an S in the last still it is a singular. Rule number 10. Some nouns are always plural. जैसे रूल नंबर 9 में some S लगने के बावजूद some nouns were singular. रूल नंबर 10 में S नहीं भी है still some nouns are always plural. For example, scissors, trousers, binoculars. जब भी हमें ये बोलना होता है इसके singular form में तो what we say a pair of scissors or a pair of trousers like this. So these were the 10 rules which I have told and I'm 100% sure by now you will be understanding that how you can form plurals of singular. This was it in your chapter. Now I will be taking your leave. Against my dear students, again I will be suggesting you the same thing which I have been doing in all my English videos, that before going and downloading the notes, try to visualize this video and solve these exercises on your own. This is very important when you are doing English grammar as it will really try to help improve your grammar. So students, first go through your textbook, then download the notes and do it as instructed by your teacher. Thank you.